Good morning, students. This is lecture 3 on aldehyde, ketones, and carboxylic acid. In last lectures, we had discussed about preparation of preparation of aldehydes and ketones. Here we are on some physical and chemical properties. Physical properties first. Generally, first let me discuss about physical states. So initially, formaldehyde and acetaldehydes. Generally, formaldehyde is a gas, and acetaldehyde, ethanol, which is a volatile liquid. Right. Higher aldehyde are generally propanol also liquid, butanol also liquid, propanol, butanol also liquid, and other aldehydes are solid at room temperature. Boiling points about all the conditions are same, like the molar mass is high, so boiling point is high. If branching is there, boiling point decrease, जैसा कि हमने हेलो एल्केन्स में भी देखा है, एल्कोहल्स में भी हमने देखा हुआ है. But if we compare the same molecular mass organic compounds, then the boiling point of aldehyde and ketones is higher than haloalkanes for same molecular mass, and that ethers, but lower than alcohols. It is because they are polar, potentially active polar molecules. C double bond जो होता है, that is highly polar, and due to the polarity of that bond, the force of dipole force of attraction is there, and that's why the boiling point is relatively higher than if the molecular mass is same, then relatively higher than haloalkanes or ethers or hydrocarbon also, but lower than alcohols. Remember this. So you can see here example also. ये सब में examples दिए हुए हैं. You can see butane, methoxyethane, propanol. Right, masses जो है वो सबके सेम ही है, but you can see propanol, that aldehyde is 322, acetone जो है वो that is 329. थोड़ा काफ़ी क्लोज ही रहता है दोनों का, masses are सेम, दोनों आइसोमर ही हैं. थोड़ा सा एसीटोन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है. एल्डिहाइड में वो उतना नहीं हो पाता, थोड़ा सा डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट में है. कीटोन में थोड़ा ज़्यादा हमें देखने को मिलता है. मीथेनॉल एंड इथेनॉल आर मिसिबल इन वाटर विद ऑल प्रोपोर्शन. अच्छे तरीके से मिसिबल होते हैं. फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर. यू कैन सी दिस सच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज फाउंड विद वाटर इन methanol and ethanol and all other aldehyde and ketone also. But as this R group, size of R group increase, miscibility decrease. क्योंकि R group जो होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, तो जैसे जैसे उसका साइज बढ़ते जाता है, मिसिबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती जाती है. राइट. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है, ठीक ठाक सॉल्युबल होते हैं. जो लोअर एल्डिहाइड्स होते हैं उनमें एक पंजेंट स्मेल देखने को मिलती है, लेकिन जैसे जैसे मॉलिकुलर मास इंक्रीज होते जाता है, स्मेल जो है वो पंजेंट ना होकर फ्रेग्रेंट होते जाती है. ओके, सो इट इज दीज आर सम प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. एंड रिमेंबर द बॉइलिंग पॉइंट्स की कंडीशन, मेल्टिंग पॉइंट की कंडीशन वैसी ही रहेगी. बाकी सारे केसेस में लाइक अगर मॉलिकुलर मास ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा. ब्रांचिंग अगर ज़्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा. सो देयर आर मैनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट वुड बी आस्क्ड, सो रिमेंबर इट. राइट. नाउ वी आर ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन. The characteristic reaction, remember the characteristic reaction of alkane is free radical substitution, halogenation we had discussed. The characteristic reaction of alkene and alkynes is alkynes are that electrophilic addition reaction. HX का अटैक कर दीजिए, HBr का अटैक कर दीजिए, मार्कोवनिकॉव रूल वगैरह सब हमने वहीं पढ़े. And the characteristics of haloalkanes is haloalkanes are nucleophilic substitution reaction or elimination reaction. Alcohols and phenols के haloalkanes और alcohols के लिए same reactions होते हैं. What? Nucleophilic substitution reactions.
or elimination reactions, right? Similarly, the characteristic reaction of aldehydes and ketones are nucleophilic addition reaction. Nucleophile, the attack of nucleophile, the bonding of nucleophile on electrophilic carbon is rate determination step, rate determining step, RDS step it is. और इसीलिए इस रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जो नाम दिया जाता है उसी बेस पे दिया जाता है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं. As we know the structure of this, न्यूक्लियोफाइल में अटैक फ्रॉम अबव अ ब्लो प्लेन, इसीलिए हमेशा जब भी अगर यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री जनरेट होती है या स्टीरियो आइसोमर जनरेट होता है तो दैट वुड बी रैसमिक मिक्सचर, क्योंकि ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है. ये स्टीरियो आइसोमर हमें दिख ही रहा है, तो ये दोनों तरीके से हो सकते हैं, राइट. सो रैसमिक मिक्सचर यहाँ हो सकता है, एंड यू विल अटैक फ्रॉम द अबव प्लेन and attack on this carbon, and when it attack on this carbon, in this case what would happen? In this case a compound is formed, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा O माइनस, और उसके बाद जो भी एसिडिक कंडीशंस है उसके बाद O माइनस विल पुल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर इवन और कन्वर्ट इनटू OH. So nucleophilic addition reactions are characteristic reaction. In these reactions sp2 will convert into sp3, pi bond will convert into sigma bond. Rate determination step is this step, slowest step it is, and it is rate determination step, rate determining step, RDS step. Order of reaction is 2 for these reactions because one is this and one is this, so order of reaction is 2 for these reactions, right? The rate of reactivity, it depends on A and B. As I already mentioned in the last lecture, the rate of nucleophilic addition, it all depends on A and B, right? Bulkiness, अगर हम alkyl group के point of view से बात करते हैं तो bulkiness of these group decrease reactivity. एंड अगर हम बात करते हैं किसी और कंडीशन में तो वी कैन सी कि द नेचर ऑफ दीज ग्रुप, इफ दीज ग्रुप्स आर माइनस आई और माइनस एम नेचर ग्रुप आर दीज ग्रुप आर इन दैट कंडीशन दे पुल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस कार्बन एंड इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ दिस कार्बन इनहेंस, और इन दैट कंडीशन रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इंक्रीज. रिमेंबर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? Here we are with some nucleophilic addition reactions. Reactivity, as I already mentioned, this is the order for reactivity of all these, right? A formaldehyde, because small size atoms are there, C6H5 minus I is there, CH3CHO, उसके बाद 2 CH3CHO in a ketone you can see बहुत कम speed हो जाती है. I think it is very much clear to you now. Some reaction I also shared here for you. The one is addition of hydrogen cyanide. You can see hydrogen cyanide, H plus and Cn minus. Can you see H plus and Cn minus? Cn minus is good nucleophile, so Cn minus will attack. You can see generally reactivity of HCl is slow because HCl not a good acid. सो Cn माइनस ज़्यादा नहीं मिल पाता, लेकिन अगर हम कोई बेस ले लें तो बेस विल अटैक लाइक NaOH, तो बेस विल अटैक विद HCl, सो Cn माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, एंड इन दैट कंडीशन दिस Cn माइनस विल अटैक ओवर देयर दिस कार्बन एंड अ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट दिस विल फॉर्म, एंड वो रैसमिक मिक्सचर होगा ऑब्वियसली, राइट? और फिर वाटर से ही इट कैन पुल H प्लस. सो OH माइनस जस्ट एक्ट, अगर वाटर से H प्लस पुल कर लेगा सो OH माइनस ही बचा रहेगा. सो OH माइनस इज जस्ट एक्ट अ कैटलिस्ट फॉर दिस रिएक्शन. आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर टू यू. स्टेप्स आर वेरी मच क्लियर टू यू. दिस cyanohydrin is very important. Remember, if it is CH3, right, और अगर हम इस cyanohydrin को हाइड्रोलाइसिस कर दें तो इट विल कन्वर्ट इनटू COOH. अगर हम इसका रिडक्शन कर दें तो इट विल कन्वर्ट इनटू CH2NH2, राइट?
So this is very important substance for the synthesis of various higher compound. So आप ये समझ लीजिए कि रिएक्शन इट इज डेफिनेटली विल कम इन योर एग्जामिनेशंस. तो बड़े आसानी से बहुत सिंपल रिएक्शन है, आप याद रख सकते हैं. दूसरा रिएक्शन है एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड. दिस इज एक्चुअली इक्विलिब्रियम बेस्ड रिएक्शन इट इज. और इन दिस रिएक्शन यू कैन सी NaHSO3 will attack over there. So Na plus being a positively charged, it will go with oxygen. HSO3 minus negatively charged, it will go with carbon. Right? Proton intramolecular proton transfer भी देखने को मिलता है. Na यहाँ पर Na जो है वो लाइक बेसिक हो जाएगा और ये एसिडिक कंडीशन हो जाएगी. तो ये H जो है यहाँ ट्रांसफर होता है और Na यहाँ पहुँच जाता है. तो ये कंडीशन ज़्यादा बेहतर क्योंकि यहाँ सॉल्ट बन जाएगा. राइट? तो बायसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है. एंड अगर हम डाइल्यूट एसिड ले लें तो ये रिएक्शन रिवर्स भी हो जाता है और वापस एल्डिहाइड और कीटोन मिल सकता है. सो दिस रिएक्शन इज वेरी हेल्पफुल फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. क्रिस्टल बना लीजिए, क्रिस्टल बनाकर वापस डाइल्यूट एसिड्स के साथ कार्बो कोई भी एसिड के साथ रिएक्शन कर दीजिए, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा और OH से H2 हटा के वापस हमें ये प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा. यस और नो? इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो OH इधर, ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन. यस और नो? और वापस हमें यही प्रोडक्ट मिल जाएगा, COH, इजंट इट? तो इसीलिए इस मेथड का यूज प्योरिफिकेशन के लिए किया जाता है. सोडियम जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के प्योरिफिकेशन के लिए वी यूज दिस मेथड. ओके. The next is again some more reaction, addition of Grignard reagent. We had discussed many reaction related with it, right or wrong? So the primary aldehyde will convert into secondary alcohol, ketone will convert into tertiary alcohol, right? For that we had discussed, ketone will convert into tertiary alcohol. So these are reaction also included in न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. उस समय मैं आपको बता नहीं पाया था क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि मैं कोई नया टर्म यूज़ करूं. नाउ आई कैन से CH3 C double bond OH when CH3 MgBr. CH3 minus is good nucleophile, it will attack over the carbon and this reaction is nucleophilic addition reaction. CH3 C and this is O minus and this is CH3 and this is H already is there and MgBr it is, and then reaction with NH4Cl. एल्कोहल्स के प्रिपरेशन से लेकर एल्डिहाइड और कीटोन की अभी प्रिपरेशन थोड़ी देर पहले जो हमने देखा था वहाँ पर भी मैंने इस रिएक्शन की वापस बात की थी. तो CH3 आफ्टर हाइड्रोलाइसिस बाय NH4Cl it will give CH3. And if the ketone is there, will turn into C double bond OCH3 with the same reaction, with the same steps, CH3 MgBr. If it is C6H5 MgBr and NH4Cl, the product will be CH3 COH C6H5 and CH3 tertiary alcohol will be there. So these are reaction we had discussed earlier also, so remember it. Addition of Grignard reagent again included, these reaction again included in nucleophilic addition reaction. Now addition of alcohols. We know alcohols have oxygen on which two lone pairs are there, and if this lone pair, that oxygen of alcohol will attack on the positive carbon of carbonyl compound. In that case, what happen you can see here. This alcohol is there, acidic condition is required in this situation. I will explain this mechanism also to you. So OR, OR will be bonded here and OH. This is called hemiacetal.
and then one ROH again attack over it, and this is acetal. If it is cyclic, this will be cyclic acetal or cyclic ketal will be there. Okay, is it clear to you now? So addition of alcohols is there. Here I'm with the mechanism of it also. I'm going to share the mechanism of it also. Okay, so you can see this is aldehyde CH3 C double bond OH. Now an alcohol C2H5OH, if it is C2H5O minus, it will directly easily attack on this carbon, no problem, and the rate would be also be high. In case of Cn minus we have seen, and in NaHSO3 we have seen. In CH3MgBr, CH3 minus is also very good nucleophile, but in this case C2H5OH, O is not exactly minus. That's why we required acidic condition for these reactions. Even for every nucleophilic addition reaction, most of the time स्पेसिफिक कंडीशंस को छोड़ के एसिडिक कंडीशंस अच्छी होती है. एसिडिक कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाते हैं. सो इट विल गो अबव, इट विल टेक हाइड्रोजन. सो दिस विल बी CH3 COH and this is plus, and this hydrogen is there, and on this carbon alcohol will attack. Any alcohol is might be there. So this will be CH3 COH and H and OH plus and R. Obviously it will lose hydrogen H plus and will convert into CH3 COH and COR and H. This is called, and these all steps are in equilibrium. Remember, ये steps सारे equilibrium में होते हैं. And this is hemiacetal. Afterwards क्या होगा इसके बाद? Afterwards again another molecule of ROH will attack. So before it attack, acidic condition. If acidic condition is there, this oxygen will attack over there. So it will form CH3 C, and here is OH2 plus, and H is there, OR is there. Now what will happen? This bond is shifted over there, and all because of equilibrium, है ना. ये बात हमेशा याद रखिएगा. और कॉन्सेंट्रेशन आपको अल्कोहल का ज़्यादा दिया गया, तभी ये रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा. कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, रिएक्शन पीछे की तरफ चलने लगेगा. ओके, सो व्हाट विल हैपन? CH3, नहीं तो आप कहेंगे वाटर अपने आप बाहर क्यों निकल रहा है भाई, कहीं वाटर ऐड हो जाता है. तो रिएक्शन के लिए अपनी कंडीशंस होती हैं. तो वो H2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, एंड OR एंड H. ली सेटेलियर प्रिंसिपल पूरा फॉलो होता है A to Z. ओके, एंड देन next ROH molecule is ready to attack over there, and it will attack over there, and in this condition CH3 C and OR, again it will get hydrogen, so ORH plus, and downward that we know already there is OR and hydrogen is there. So in that condition what will happen? Hydrogen will be removed from here, CH3, and the product will be CH OR, and this is called acetal, and all these steps are in equilibrium. जैसे ही ROH का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ सॉल्यूशन में, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगा. इक्विलिब्रियम पर जो है वो एसिटल 100% नहीं रहेगा, ना ही एल्डिहाइड 100% रहेगा. जिसका आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, जैसे कंडीशन चेंज करेंगे वैसी कंडीशंस होती जाएंगी. इज इट ओके टू एवरीवन नाउ? सो दिस इज द रिएक्शन. ऐसे सिमिलर, बस अंतर ये होगा, एक बार ये अटैक कर देगा, OH बन जाएगा, OH2 बाहर निकल जाएगा, दूसरे बार ये अटैक कर देगा. तो साइक्लिक
कीटोन से बने तो कीटल, एल्डिहाइड से या एसिड ग्रुप से बने तो एसिटल लाइक, है ना, साइक्लिक कीटल यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं. सो एसिटल और कीटल फॉर्मेशन इज ऑल्सो अ रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ reaction, also type of nucleophilic addition reaction. Thank you for